We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society at milestone of 2987. I would like to welcome Dr. Suparna Sanil Mukherjee Madam from Bolpur. I would like to welcome Dr. Sakat Kumar Basuji from Calcutta in Canada. Welcome, sir. Welcome. Without wasting much time, we would like to listen to you on protein. Dr. Sakat Kumar Basuji. I hope he is busy somewhere. Dr. Sakat. Then, with your kind permission of the dice, yes. नहीं कर गया था 1 मिनट. जी, Give जी. me 1 minute. It is somehow hanging. So should I start in between? Hello, Sharma ji. Hari Om. Can you hear me now? Yes, yes. Thank you. Thank you. Thoda trouble जा रहा, now it is okay. Continuing. Thank you very much. Once again, it's a pleasure to be on your platform. So I will quickly talk about the importance of protein in the sense that this is one very important food component, and particularly in other countries, is that it has, as you have highly mentioned, that it is becoming extremely popular. Lots of people going to the gym, and other part is going for protein supplements as a part of building their body. It is not always very healthy. This artificial protein and other powders that are available commercially, many times those who are building their bodies and doing other stuff are continuously getting into trying to incorporate bodybuilding muscles and stuff, and they're incorporating more rather than taking dietary protein through animal or plant fat. They are very much interested in taking protein supplement powders. It is just like your Complan, Horlicks, and other kinds of stuff, which is loaded with sugars. It is just like another way of taking protein. And in many cases, recent research is indicating that it is not a very good way of incorporating protein in our diet. For vegetarian and non-vegetarian people, it is suggested that you should incorporate protein in your diet through natural food. And by natural food means, if you are a non-vegetarian person, then there is fish, meat, and eggs, which are primary proteins and additional sources of various amino acids, particularly essential amino acids, helps in building your body, essential for your bodily constitution, strength, your ability to work, because protein constitutes one of the proximate principles of food, including protein, carbohydrates, and like fat. So it is a very, very essential, important component. And for those who are non-vegetarian, there is a wide spectrum of various kinds of pulses that you could incorporate आपका in your वीडियो diet. नहीं दिख रहा साकत जी. Video is not. Hello. 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 Hi. Hello. Yes, Hi. yes. Madam, you want to start because you are in a train, you want to talk? Yes, yes, yes. Yes, yes. Then you please go ahead. Talk about protein for 5 minutes. Thank you. Okay. Thank you very much for giving me such an opportunity on this auspicious platform. Protein is very important component for our daily food habit and livelihood sustenance. It has been observed that there are several communities who have the different types of protein intake quantity. So the work it is also depending upon the nutritional value, and it gives us the feedback for the nutrition and the development of our body parts and the organs. Different types of organs have the protein components and which is needed for the proteins. It has been observed in the especially in the Jualbhanga village at Paschim Medinipur district of West Bengal, where two types of people, the tribal people, are residing at the same village, and their protein intake is quite different because they have been taking the seasonal flowers, fruits, bugs, all are the plant proteins they are getting. And the same time, the animal proteins is very rare to them.
So how this protein intake is incorporating their food habit and the healthy status? Just because of they are taking, they are too close to the natural system or the nature. So they are collecting the forest products, the forest protein fruits, and they are also having this protein intake from the forest. At the same way, the cooked protein they are taking from the smashed potato and then the green vegetables which they are buying for the market. So the variation, if the comparative study may have done for this, how much protein or calorie intake they are taking from the and how much nutrition value they are getting, it has been observed that the protein they are absorbing and they are getting from the forest food rather than the market food. So that's so it is very important part of the our society, our norms, our culture. So where the people are residing in the forest and forest range and the urban sides of our society. So there is a difference. When we are taking the animal protein and the plant protein, both are the different components are altogether we are taking. So it has been observed that those who are getting the plant protein, they are not suffering from any kinds of diseases and ailments. They are far away from the diseases. But those who are taking the animal protein, most the cases they are suffering from the various types of diseases and ailments. So it is very important part how we can give the importance and what is the impact of the protein intake in the food habits, especially in the daily livelihood sustain, which is depending upon the community build up and community food intake pattern. So the hence it is also developing the community kitchen where they are sharing their food, so everyone can get the equal amount of protein and equal amount of food by which no one can suffer from any kinds of diseases. And especially the children, they should not suffer from any kinds of malnutrition. This is the impact of the protein. And today's 21st century, we should go ahead for the development of the protein intake, which is very important part of the our society. Just because the women should not suffer from of anemia and the children should not suffer from any kinds of malnutrition. So protein intake is very important part of our life. Thank you very much. And Ayush is also have the importance for this protein intake and calorie sustainability for the development of the life. Thank you very much. Thanks for being such an opportunity Thank you on very this much. auspicious platform. Thanks a lot. Thank you very much, madam. Thank you very much. Second Thank you, would be, Sharma ji. I'll continue. Thank you. uh, She did a splendid job while getting down from the station on the Howrah station. I think very nicely managed the time. Ayush has made So, significant impacts from various corners destination, I am reaching to and my places. destination and I have just completed the. She's talking from the train. Okay, madam. Thank you very much. Thank Thank you. you. Thank You can disconnect now. Okay. you. Okay. Okay. today we have felt earthquake also. Yes. We have a Bhuchal here in Kolkata, and there was. I'm a little bit getting worried. We'll definitely invite a geologist someday to talk about this. These small tremors coming out is an indication of a bigger tremor down the future. So we need to understand how this is working out. But nonetheless, I'll continue with the protein part, indicating that as Madam has nicely highlighted, that there is a concern about India, particularly among women, that there is insufficient intake of protein, which is important to understand that particularly for women, because they have been through a loss of a lot of blood, and because of pregnancy and related issues, it is important that they constitute a well rounded diet so that they can enrich themselves with a lot of proteins. And not only for those who are non-vegetarian, for vegetarians also we have a wide range of choices from various dals, pulses and legumes that we can incorporate, whether you are taking various types of kidney beans, moong dal, masoor moog, whichever is available, any kind of dal that you can incorporate in your diet depending on whichever part of India you are and what kind of diet you are used to. A regular incorporation of pulses and legumes are very important for enriching
the protein content of your diet. But nonetheless, what is important, as Sharmaji was saying, that the protein intake has also become a very high grade fashion, and this artificial protein, I mean, either people are taking in the form of syrup or people taking in the form of powders and stuff, particularly those who are going to the gym. Long term research do indicate that these have negative impacts on our body, and people suffer from gut related, probiotic deficient constipation and other complications within the alimentary system if you are consuming them for too long. Many do not have approvals, and many are substandard in the quality and not incorporating good quality proteins into our body. So for those who are in athletics or are in very high kind of sports activity, that their in the regular need of protein intake is much higher, as because of loss of muscle wear and tear that they will undergo because of a lot of friction that they were having. But for an average ordinary people, the standard diet that we have, whether you are a vegetarian or a non-vegetarian, the traditional Indian diet for both these groups are sufficient enough if we include some legumes and stuff. And those who are interested in non-vegetarian parts, in some fish is considered to be one of the best available protein because of the saturated fatty acid ratios. And as you could see in Japan and other countries, they have very little heart attacks reported, is because of excessive fish consumption that Japanese are exposed and used to. But the Heart and Brain Strokes Association of both United States and Canada highlight upon having a balanced diet and protein incorporation is important. What they suggest that you should have 5 colors on your plates while you are consuming food, whether it is leafy green or whether there is carotene or anthocyanin or xanthine or whatever, lycopene, which is in the form of tomatoes and stuff. The vegetable incorporation is important, and there has been a more and more emphasis as we are aging. Research are indicating that as you cross 50 or as you get into that 50 to 60 range, possibly it is being suggested around the world that be more be shifting towards plant-based food, and particularly plant-based protein, because they will be comparatively easier for you to digest, and it will not be hard, particularly the red meat kind of stuff that has detrimental negative effect on our body system and building up of cholesterol and other related issues. So eating healthy and eating rounded and eating and focusing more on plant-based protein intake is now considered to be one of the very good resource of building your muscles and strength and building your body. In the same way, healthy exercises, adequate water, incorporation of proteins in your diet, along with balanced carbohydrate and fat intake, is essential for a healthy quality life. Thank you very much, Dr. Sharma. It has always been a pleasure to be a part of the platform. And on International Protein Day, I congratulate everyone for being on this platform and be a part in using protein as a healthy constituent of our diet. Use natural food rather than synthetic powders and other stuff. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Now, if you, with your kind permission, I would like to, if you kindly permit me, I would like to share my views on protein. Sure, Sharmaji. For this part, once we complete, keep Madam and myself at the end, because she will get the time to reach her home. Then it will be easy for her to make the second presentation. Okay. Okay, So keep us okay, at the end. Yes. okay. You can continue. No problem. Thank you. Thank you. We have enough time to complete my presentation also. Protein are compounds composed of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Nitrogen is the basic element of protein. So these are arranged as strands of amino acids. Essential role: cellular maintenance, growth, functioning of the human body, serving as the basic structural molecule of all the tissues in the body. It makes up to nearly 17% of the total body weight. Amino acids are made up of small units, proteins. These are called amino acids. 24 amino acids are stated to be needed by human body, out of which 9 are called essential amino acids because our body cannot synthesize them in required amounts. So they must be obtained from dietary supplements.
Out of 20 amino acid, 11 are considered non-essential or dispensable. 9 are essential or indispensable. In essential amino acid, leucine, isoleucine, histidine, lysine, tryptophan, phenylalanine, methionine, threonine, valine, ये इतने एसेंशियल हैं। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी हैं, अर्जिनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी हैं, जिसमें ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड वगैरह वगैरह आते हैं। तो 3 तरह से क्लासिफाई हुए, स्ट्रक्चर के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, फंक्शन के बेस पे। तो स्ट्रक्चर की, क्वालिटी की और फंक्शन की बात करता हूं मैं। फंक्शन में प्रोटीन के स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन और टॉक्सिन, ये सभी प्रोटीन के फंक्शन हैं। अब मैं अलग अलग की इतनी सारी बात नहीं आपको बता के बोर करना चाहता, मैं लाना चाहता हूँ क्वालिटी और न्यूट्रिटिव वैल्यू पे। तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो बॉडी हेल्थ, मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। एनिमल प्रोटीन जैसे एग, चीज, मिल्क, मीट, फिश, ये हाई क्वालिटी और कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं इनको, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ये एसेंशियल अमीनो एसिड दे देते हैं। प्लांट प्रोटीन, ग्रेन, कॉर्न, नट, वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये सभी लोअर क्वालिटी और इनकम्प्लीट प्रोटीन माने जाते हैं, बिकॉज मेनी प्लांट प्रोटीन्स लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन उसी चीज को मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कुछ न कुछ रसायन में डालने का प्रयास किया गया है। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कैन हाउएवर बी कंबाइंड टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड। ये कर ही जाते हैं, सब्जियां हमारे यहाँ तरह तरह की चीजों को मिला के बनती हैं, एक अकेली चीज की नहीं बनाई जाती। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है हमारे पेट में? ये स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन शुरू होता है इसका, या संपन्न होता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन है, ये प्रोटीन पे असर करता है एसिड मीडियम में, वो हाइड्रोलाइज करता है, ये डाइजेस्ट नहीं करता, तोड़ता है, और सिंपल पॉलीपेप्टाइड्स में इसको तोड़ता है, जिससे इसका डाइजेशन इजी हो जाए। इंटेस्टाइन में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेप्टाइडेसेस, ये पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस के अपने हार्मोन है, जो इसको हाइड्रोलाइज करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को फ्री अमीनो एसिड में, क्योंकि हमारा शरीर अमीनो एसिड के रूप में उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अब अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में और एंटर करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड उनको पूरे पार्टों में बॉडी ले जाता है। अब मेटाबॉलिज्म की इनकी यदि अमीनो एसिड की बात कर लें, क्योंकि प्रोटीन जो भी पनीर खाओ आप, मांस खाओ आप, उसका अल्टीमेट रिजल्ट अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड हमारी बॉडी स्वीकार करती है, हम कितनी भी मैगी डिश खा लें या कितनी भी चना क्यों ना खा लें। तो चीफ यूज ऑफ प्रोटीन इज टू प्रोवाइड मटेरियल फॉर बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल। ये फ्यूल के, बॉडी फ्यूल के रूप में भी काम आता है। एक्सेस प्रोटीन एंड अनसुटेबल प्रोटीन आर स्प्लिट अप टू लिवर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अनसुटेबल प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी है, सांप का जहर भी प्रोटीन है तो जहर भी प्रोटीन है और खाना भी प्रोटीन है, इनको लिवर स्प्लिट कर देता है। ये ग्लूकोज और सेकेंडरी यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर, इसमें यूरिया सबसे ज्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इसका बेसिक एलिमेंट है। तो ये डिमिनिएशन डिमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये प्रोसेस कहलाती है। जो ज्यादा प्रोटीन होता है या अनसुटेबल होता है उसको तोड़ के, काम का होता है तो ग्लूकोज बना लेते हैं काम से। नाइट्रोजनस कंटेंट जो है अमीनो एसिड का, वो पहले तो अमोनिया में बनता है, जो कंबाइंड होता है कार्बोनिक एसिड के संग में, और यूरिया और वाटर दो में बदल जाता है, यूरिया पेशाब से भी निकल जाती है। ग्लूकोज
जला दिया जाता है काम में या स्टोर हो जाता है। यूरिया जो है वो यूजलेस हो जाती है, तो वो ब्लड स्ट्रीम से और किडनी से निकाल दी जाती है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। ये किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ये पूरी प्रोटीन की व्यवस्था है। अब प्रोटीन फंक्शन की यदि मैं बात करूं, तो ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग, ये सिंथेसिस है प्राइमरी फंक्शन। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मसल का, ऑर्गन्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, कोलेजन का। ये रैपिड ग्रोथ में एडिशनल प्रोटीन लगते हैं, जो लोग वाग जैसा निशान जी बोल रहे थे वो भी खाते हैं, सैकत जी भी बोल रहे थे। मेंटेनेंस ऑफ वियर एंड टियर भी यही करता है किसी भी एज ग्रुप में। रेगुलेटरी फंक्शन भी यही करता है। Certain amino acid and protein have highly specialized function in the regulation of body processes and protection against diseases. तो हीमोग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आरबीसी में ये ऑक्सीजन ले जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो वाटर बैलेंस मेंटेन करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। एंटीबॉडीज जो है मेड अप ऑफ प्रोटीन विच प्रोटेक्ट अस बाय इंक्रीजिंग द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिसीज है, तो इम्यूनिटी भी बढ़ाती है एंटीबॉडीज। एनर्जी, ये पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। 1 ग्राम प्रोटीन यील्ड ऑन द एवरेज 4 किलो कैलोरी। If the diet does not supply adequate calories from fats and carbohydrates, प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो जाता है तो एनर्जी नीड पूरी कर देता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी? तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन बॉडी साइज 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। माने 0.8 ग्राम माने 80 ग्राम मुझे प्रोटीन दिन में लगे, यदि मेरा 100 किलो वजन है तो 0.8 से 100 किलो का 80 ग्राम हुआ। द रिकमेंडेड अलाउंस फॉर एन इन्फेंट अप टू 6 मंथ ऑफ एज, उसको पर किलोग्राम के हिसाब से 0.8 नहीं 2.2 ग्राम लगेगा। उसको ज्यादा लगेगा क्योंकि बॉडी वेट उसका बढ़ रहा है। प्रेग्नेंट वुमन 30 ग्राम प्रोटीन उसको एडिशनल लेना चाहिए रोज, जिससे उसके गर्भ को बढ़ने में। अब सोर्स की बात करें तो हम सब जानते हैं, एनिमल सोर्स भी है, नॉन एनिमल सोर्स भी है। पोल्ट्री, एग, फिश, मिल्क, जहां देखो वहां प्रोटीन बिखरा हुआ पड़ा है। ग्रेन, सीड्स, नट्स, बीन्स, वेजिटेबल, बहुत सारी है। मिल्क है ही है हमारा नॉर्मल प्रोटीन, एज वेल एज प्रिविलेंट लो क्वालिटी प्रोटीन फूड जैसे लेग्यूम भी है। अब अंडे में 12 से 14%, मीट में 18 से 20, फ्रेश मिल्क में 3.5 से 4, ड्राइड या स्किम्ड में 33 से 38%, ऑयल सीड्स जितने हैं मूंगफली वगैरह सब में 18 से 40%, दालों में 18 से 24%। तो डिफिशियंसी की यदि हम बात करें तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इसको कहा जाता है, पीएम। ये गरीबों की डिसीज है, बेचारों की अंडर नरिश्ड की। तो इसमें पीएम, मरस्मार, क्वाशरकर, ऐसे 3 वैरायटी हैं। माल न्यूट्रिशन के कारण है। ये दोनों जितने हैं, पीएम गोलमेज क्लासिफिकेशन, वाटर फ्लो क्लासिफिकेशन, गोमेज क्लासिफिकेशन, ये बड़े फॉर्मूले बना के दिए हैं, इतने में डिटेल में नहीं जाएंगे। मैरस्मस की बात करें हम, तो ए फॉर्म ऑफ पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये सीवियर कैलोरिक डिफिसिट चीफली ऑकरिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। देखिए कैसा माल न्यूट्रिशन का बच्चा है। तो बहुत सारे इसके सिम्टम है और इसका अल्टीमेटली इलाज है उसको प्रोटीन दिया जाए। ये क्वाविश्योर कर, ये सीवियर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है। ये नॉर्मल है, ये देखिए दोनों का अंतर करके बताया हुआ है। और इसमें वीनिंग मार्क्ड बाय लिथार्जी, ग्रोथ रिटार्डेशन, एनीमिया, इडिमा, पॉट बेली, स्किन डिपिगमेंटेशन एंड हेयर लॉस और चेंज इन हेयर कलर, ये इसमें पाया जाता है। मून फेसिज, वेस्टेड मसल, साइकोमोटर चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस इसमें पाए जाते हैं। ये दोनों अंतर देख लीजिए, क्वारवेस्कोर और मैरस्मस के। अब ज्यादा यदि कोई प्रोटीन लेता है तो क्या होता है?
ज्यादा प्रोटीन लेने में ये स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू के रूप में। ये बर्डन है, इंक्रीज द बर्डन ऑन लिवर एंड किडनी, तो ज्यादा प्रोटीन नहीं जरूरत से। टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट द वेस्टेज, यदि ये डिसीज्ड है तो और नुकसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। निशान जी, आई होप I have been able to communicate the details of protein. Thank you within time. Thank you very much. शकत जी है क्या? यस यस, मैं हूँ। कैसी रही? वेरी वेरी नाइस। और तुम, ये तो मेरा अंडर ग्रेजुएट क्लास का वो जो प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते थे वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ। वेरी वेरी नाइस। यू टुक मी टू माय नॉस्टैल्जिक डेज ऑफ यूनिवर्सिटी।